अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे फीडबैक मैकेनिज़्म। पिछले लेक्चर में मैंने आपको डिफरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स करवाया था। उसमें मैंने आपको बताया था कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स सक्रीट डिफरेंट हार्मोन्स इनटू द ब्लड, लेकिन ये जो हार्मोन्स होते हैं इनका रेट वेरी करता है अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द बॉडी, बिकॉज दे डू नॉट सक्रीट देयर हार्मोन्स एट अ कॉन्स्टेंट रेट. देयर रेट वेरीज विद द नीड्स ऑफ द बॉडी. So feedback mechanism is very important. It means the regulation of the process by the output of the same process. यानी feedback mechanism किसी भी चीज़ को control करता है by the output of this process. Feedback mechanism की different types हैं. Number one is negative feedback, other is positive feedback. Negative feedback का मतलब ये होता है कि output of the process decreases or inhibit the process. यानी जो भी हमारे पास आउटपुट आ रहा है वो उस प्रोसेस को डिक्रीज़ कर रहा है या इनहिबिट कर रहा है. फॉर एग्जांपल, इसकी एग्जांपल आपको दी हुई है ब्लड ग्लूकोज कंसनट्रेशन. फॉर एग्जांपल व्हेन द ब्लड ग्लूकोज कंसनट्रेशन राइजेस. अब हमारी बॉडी में अगर ब्लड ग्लूकोज कंसनट्रेशन राइज कर जाती है, देन द पेनक्रियास क्रिएट द हार्मोन इंसुलिन. सो मैंने आपको बताया था कि पेनक्रियास के अंदर मेजर पोर्शन जो होता है इट इज़ डक्टलेस एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड इट कंटेन्स द ग्रुप ऑफ सेल्स विच आर नोन एज आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस विच प्रोड्यूसेस टू हार्मोन्स. वन इज़ इंसुलिन एंड अदर इज़ ग्लूकागोन. सो अगर ब्लड ग्लूकोज कंसनट्रेशन राइज करेगी तो पेनक्रियास विल सक्रीट इंसुलिन. So when pancreas secrete insulin, the decline in the blood glucose concentration to the normal set point will takes place, which inhibits the secretion of insulin. जब इंसुलिन की सिक्रेशन इनहिबिट हो जाएगी और ब्लड ग्लूकोज कंसनट्रेशन विल फॉल, देन द पेनक्रियाज विल सिक्रीट द हार्मोन ग्लूकागोन. तो पेनक्रियाज हार्मोन जो प्रोड्यूस करता है उसको हम ग्लूकागोन कहते हैं. इट मीन्स दैट ब्लड ग्लूकोज कंसनट्रेशन आउटपुट, यानी जो ब्लड ग्लूकोज कंसनट्रेशन का जो आउटपुट होता है इट कंट्रोल्स द सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन एंड ग्लूकागोन. Similarly, next type of feedback is positive feedback. It means that the process increases, changes resulting from a process increases the rate of the process. For example, इसकी example आपको दी हुई है suckling action of infants releases the hormones in mother. यानी जो suckling action होता है infants का वो हार्मोन रिलीज़ करता है which results in the production of more milk. So negative feedback and positive feedback both are very important. नेक्स्ट आपका टॉपिक है डिसऑर्डर्स ऑफ नर्वस सिस्टम. नर्वस सिस्टम के जो डिसऑर्डर्स हैं दे कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू टू मेन ग्रुप्स. बेसिकली जो नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर्स होते हैं दे आर कैटेगराइज्ड इनटू वस्कुलर डिसऑर्डर्स. वस्कुलर डिसऑर्डर्स फॉर एग्जांपल पैरालिसिस एंड फंक्शनल डिसऑर्डर, और दूसरे हमारे इसके डिसऑर्डर होते हैं उनको हम फंक्शनल डिसऑर्डर्स भी कहते हैं. वस्कुलर डिसऑर्डर की एग्जांपल आपको दी हुई है पैरालिसिस. इसकी एग्जांपल है पैरालिसिस, जबकि फंक्शनल डिसऑर्डर की एग्जांपल है एपिलेप्सी. वस्कुलर डिसऑर्डर्स आर ड्यू टू द डिस्टर्बेंस इन द ब्लड सप्लाई टू द नर्वस सिस्टम. वस्कुलर डिसऑर्डर्स बेसिकली इसका रीज़न ये होता है कि अगर हमारी नर्वस सिस्टम के अंदर ब्लड सप्लाई डिस्टर्ब हो जाती है देन दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वस्कुलर डिसऑर्डर. While functional disorder are due to the disturbance in the nerve impulse transmission and generation. अब आप we will study one by one. First is vascular disorder, that is paralysis. Paralysis means the complete loss of function of one or more muscles too. It is caused by the damage to the central nervous system. Paralysis में basically हमारे पास muscles group का loss of function will takes place, and it is caused by the damage to the central nervous system, brain and spinal cord. This damage may be due to the stroke, rupture in the blood vessels of brain and spinal cord. So patients जिनको paralysis का attack basically हो जाता है they may paralyze through one or other side of the body, and there may also be paralysis in the lower extremities in all four limbs. So next disorder is epilepsy. This is the functional disorder. It is due to the abnormal or excessive discharge
of nerve impulses into the brain. It causes unprovoked seizure in patients. A seizure of epilepsy is a temporary abnormal state of the brain marked by convulsions. Convulsions का मतलब होता है कि जो एपिलेप्सी होती है इसमें बेसिकली पेशेंट्स को स्ट्रोक्स होते हैं, और इन यंग पीपल एपिलेप्सी में ड्यू टू द जेनेटिक और डेवलपमेंटल चेंजेस, while इसमें बेसिकली ब्रेन ट्रॉमास दे आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर एपिलेप्सी. There is no treatment of epilepsy, but basically medicines can control these seizure attacks. Seizures means के different झटके जो लगते हैं इस पेशेंट को, तो different हम medicines यूज़ कर सकते हैं to control seizures. इसके अलावा different medicines they are also used. These are anticonvulsant or anti-epileptic drugs. Anticonvulsants or anti-epileptic drugs are also used for the treatment of epilepsy.